I can see only 3 eyes, which means other than these 3, nobody else could complete the assignment. Have you heard what I said? I said write I if you have completed your assignment. Mayank, okay, now 4. So why couldn't others do? What was the problem? Prakhar? Prakhar, unmute yourself. Yes, sir. It took a long time to unmute yourself. Sorry, sir. Fine. Now let me know. Let me know what was the problem. Why couldn't you complete your assignment today? One thing you forgot. Second thing, it was quite very difficult. You did not understand how to do it. Third thing, you did not get time. You had other things to do. And fourth thing, IPL. Which of these 4 reasons is applicable on you? Prakhar? Yes, sir. Which of these 4 reasons applies on you? Sir, no one. Sir, You I have a new 5th reason. no, sir. I haven't completed the whole chapter. Okay, it is incomplete. Yes, sir. Okay, so those who have completed are writing I. Those who have not yet completed can write I upon 2. I by 2. Let me see. I by 2 also looks like 1 by 2, no? So it is half. Okay. There are many who are writing this. So how much more time do you need to complete it? It's an interesting one and important thing, beta. You need to do it. If you once complete it, if you take these pains, it will be very, very helpful for you when you revise. By next class, Pranav Pradhan says. Just 5 minutes. Prakhar Modi, you did not get these 5 minutes earlier. He wants only 5 No, minutes. Okay, good, good. By next class. By next class. Okay, then. I'll ask once again in next class. By today. ठीक है. Okay, fine. Mm, short monsoon diary. Sir, Hmm. sir, you said that in previous class that we read it simply, sir. Whole lesson. Yes. We'll have a simple reading. This is what I said. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Yes, 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 yes.
I asked you to read it yourselves once, and then I said we'll have a reading here in the class because there is nothing Yes, much sir. to explain. There are few things because it is just a diary entry made by James Bond or Ruskin Bond. Ruskin Bond. Ruskin Bond. Ruskin Bond. Okay. Where does he live? Masuri. Masuri. Landor Bazar. Masuri. From Missouri. Masuri. Yes, yes. So whatever he observed, he has written it down in his diary and some pages. As I said, you can remember dates easily once you see the dates in sequence. It started on June 24th, and the perhaps the final entry here, as given in your lesson, is January 26th, perhaps. No, no. There is one more entry after January 26th, and that's March 23rd. March 23. Okay. So you write down these dates on a side of your paper, then you can see the order, the sequence, whatever it is. It will be easier for you to remember. Okay. Now, when you see different dates, these are all different parts of year. June, which season is this? Monsoon. Monsoon. June, in the month of June. Which season is this? Monsoon. May, June, April, May, June. You get Summer. vacation here, Summer. na? Summer. 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 It is summer in June. Yes, Now sir. this is the last week of June where it's the beginning of monsoon. Last week of June, here as suggested, as described by Ruskin Bond, it tells us that it is the beginning of monsoon. Okay. Then August. Now August, which season is this? Monsoon. Yes, it is peak of the monsoon. It is completely a rainy season, isn't it? Yes, sir. Then 31st August. Huh. Now October. What is this? Starting of winter. Does winter start in October? No, sir, it starts in December, December to February. Starting, you can say. See, actually, these days, nothing Sir, is it's, certain. sir, it's Nothing autumn is in certain. But October. yes, it is autumn in October. It is autumn here. Closing of monsoon. ठीक है? Monsoon is coming to an end. And then we can say it is time of autumn. And after autumn, it is the beginning of winter. Right? Is this how we understand? Is this how we know? But yes, things keep on changing, things keep on shifting. You would have heard it is raining heavily somewhere in some part of our country. Have you heard that? Yes, sir. Yes, sir. These days, also it is raining heavily somewhere. Okay. So because we have seen this thing, the introductory paragraph, so we have to start from here. May I expect one student to read one day's entry? So may I Yes, Chahit? sir. Samay Shahid, May I Chahit? Shahid, Prakhar. Prakhar, Niyati. First Shahid, then next entry by Prakhar, then next entry by Niyati. आगे बुकिंग करवा लो. सर्वज्ञ. सर्वज्ञ. सर्वज्ञ, okay. After Niyati, सर्वज्ञ. Sir, Rishika. ऋषिका, okay. 5 बुकिंग्स हो गए अभी भी 5 वेटिंग. Sir, Aniket. Okay, after Rishika it is Aniket. Then we still need 4.
चलो तब तक देखते हैं if somebody wants to. Yes भाई, start. Who is the first one? Chahit. Yes, sir. Yeah. A short monsoon diary. The first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. 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 Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. Through, through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. Hmm. Okay, that's it. See, what are the highlights of June 24? So it's strange how all the birds fall silent as the mist comes Beta, climbing. most The important first thing. day of monsoon means Yes, So, it is the first day of monsoon that year. In that particular year when he wrote this, okay, he saw monsoon starting on this day. Okay, so it was first day of monsoon mist. Not monsoon, it is monsoon mist. Do you know what mist is? yes, sir. So yes, sir. fog, Fog. sort of Huh? fog. Okay, okay, okay. So how is the visibility when you have mist? It's very tough. So very low. Yes. है ना? All that clarity goes away. It's hard to see. Seeing, sighting is it becomes difficult. So the mist that you generally see, you find in monsoon season. On June 24, it was for the first time he saw that mist, not the monsoon season. मॉनसून सीजन में जो मिस्ट देखने को हमें मिलता है, स्पेशली वो जो हिल स्टेशंस है, जहाँ पे हिली एरियाज है, जहाँ पे वो रहता है मसूरी में, तो वहाँ पे मिस्ट और ज्यादा होता है. तो मॉनसून सीजन का जो फर्स्ट मिस्ट उसने देखा था, वो देखा था उसने जून 24 को. इज दैट ओके? सो दिस इज फर्स्ट हाईलाइट. नाउ व्हाट इज द अदर हाईलाइट ऑन दिस डे? Birds All were falling the silent. Birds were falling silent. yes, sir. Yes, sir. Acha, why were the birds falling silent? So because of monsoon. Sir, because of the mist. 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 है ना? ठीक है? They fall silent when they are not. अभी just now I asked about the visibility. When birds are not able to see clearly, they become silent. When it is open and clear, they can see, yes, it is daytime for them, and they keep on chirping. But if due to any reason they cannot see through, then they do not consider it a daytime, and then they fall silent. They become silent. Okay? So second thing is birds falling silent. Then what is the third highlight? Forest is deadly still as through it were midnight. Okay. Okay. Mist is concealing the hills. The mist, it is concealing the hills, matlab it has covered it. And concealing means the hills are hidden now. You can't see them. है ना? इसने इस तरीके से कवर कर लिया, छुपा दिया हिल्स को. यू कांट सी, आपको सिर्फ मिस्ट ही दिखाई देगा. है ना? और उसके पहले वाली लाइन में एक चीज और लिखी हुई है कि दिस इज व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलंकोली. नाउ मेलंकोली मीनिंग इज गिवन हियर. तो क्यों हमें सैडनेस दिखाई देती है? क्यों हमें ऐसी सैडनेस फील होती है जब मिस्ट आ जाता है? तो इसलिए फील होती है क्योंकि जो मूवमेंट्स हैं, जो नॉइस ऑफ नेचर है, ठीक है, क्या है वो बर्ड्स का, तो वो सब बिल्कुल शांत हो जाता है. तो इस वजह से हमें जो है उसके अंदर सैडनेस फील होने लग जाती है. दिस इज गिवन हियर. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलंकोली. इज दिस लाइन क्लियर? Yes, sir. Question can be Yes, like sir. this. Question can be like this. Why do you think the mist
is so melancholy? That can be the question. And the answer is it stops movement. You cannot see the greenery through. क्योंकि चारों तरफ आपको अच्छा कब लगता है? When are you happy? When does it appear pleasant? जब आपको पूरी ग्रीनरी दिखाई देती है ना? और अगर मिस्ट है तो बिकॉज ऑफ दैट यू कांट सी इट. वन थिंग. सेकेंड थिंग, बर्ड्स स्टॉप चर्पिंग. तो वो जो जो वॉइस ऑफ नेचर था दैट इज ऑलवेज प्लेजेंट, वो भी बंद हो गया. आपको बहुत सारी चीजें भी दिखना बंद हो गई. थोड़ा डार्कनेस डार्कनेस वहां पे फील होने लग जाती है. तो ये सारे रीजन है दैट मेक्स अस फील मेलंकोली एंड दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ मिस्ट. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट हाईलाइट, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. ठीक है, वो हम देख चुके हैं. ओनली एन आवर अगो the trees were ringing with bird song. Lots of birds were there and they were all singing, so that it was echoing. That ringing means that echoing sound of the chirp of birds, so many birds together. तो वो गूंज रहा था वहां पे अभी 1 घंटे पहले. जैसे ही मिस्ट आया सब शांत हो गए. Then and now the forest is deathly still as though इट वर मिडनाइट. फॉरेस्ट पूरा इतना स्टिल हो चुका. मैंने अभी आपको बताया ना, ऑल मूवमेंट स्टॉप्ड, ऑल नॉइसेस स्टॉप्ड. ठीक है, इतना स्टिलनेस आ चुकी है, इतना साइलेंस हो चुका है कि वो स्टिलनेस को राइटर ने क्या बोला? डेथली स्टिल. डेथली स्टिल मींस व्हेन डज द बॉडी बिकम मोस्ट स्टिल? When देयर इज ऑलवेज सम मूवमेंट. sir, at death. Yes, movement is the identification of your being alive. If that movement stops completely, then the person is dead. Even breathing is a movement. ठीक है, तो वो भी बंद हो गई. कंप्लीट स्टिलनेस जो है वो है डेथ. दैट्स व्हाई ही कॉल्स इट डेथली स्टिलनेस. ठीक है. थ्रू द मिस्ट बिज्जू. नाउ देयर इज अ बॉय देयर. यस बेटा. So we can say that, so we are emphasizing that they are like a still dead person, sir. Who? So these birds and also No, not birds beta. Trees. trees and also forest. The entire scene over there, everything over there. When you are there on that hilly site, there are so many things. Now there is complete silence, there is complete stillness, so the entire thing appears to be dead. It is not for birds only, it is not for trees only. Writer here is talking for everything as a whole. Got it? Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now there is a boy named बिज्जू. होगा कोई वहां पे बिज्जू? आपकी क्लास में है क्या कोई बिज्जू? No, sir. किसी का निकनेम है क्या बिज्जू? Yes, sir. है. Yes, sir. Sir, Brijesh. Yes, sir. Yes, sir. है. क्या है? Sir, Brijesh. Brijesh. ब्रिजेश. ब्रिजेश. ठीक है. तो ब्रिजेश इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. नहीं छोड़ो, बिज्जू रहने देते हैं अपन इसको. There is a boy there. He is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. आप देख लो कि मिस्ट कितना है. Writer heard बिज्जू that he is calling his sister, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है. Yes, number 2. Who is this? Sir, Prakhar. Yes, beta. Start reading. Yes, sir. Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too. And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and the post office. The mist affords a certain privacy. A
A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. It's a beautiful statement. A paradise that might have been. What is paradise? Sure. Hmm. स्वर्ग. ये हो सकता था जो प्लेस जहाँ पे वो हैं. आप जिस चीज को डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हो, है ना, हिल स्टेशन एंड वैली, तो कैसे डिस्क्राइब किया कि ये स्वर्ग हो सकता था. अब स्वर्ग तो जहाँ है वहाँ है, नोबडी हैज सीन दिस, लेकिन ये इतना सुंदर है कि अगर स्वर्ग होता है तो फिर ऐसे ही तो होता है. ठीक है, तो अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, इट कुड आल्सो हैव बीन अ पैराडाइज. यहाँ पे भी स्वर्ग हो सकता था. दिस इज हाउ इट डिस्क्राइब्स हिल स्टेशन एंड वैली. ठीक है, दिस यू अंडरस्टूड. नाउ सी सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन. अब वहाँ पे एक जो अर्ली मानसून रेन होती है ना, जब व्हेन मानसून इज एट इट्स पीक, देन इट रेन्स हेवीली एंड ऑल. बट जो शुरुआती जो रेन है वो अ, उसने कब ऑब्जर्व करा? जून 25 को. वेदर कैसा था? इट वॉज वार्म, इट वॉज ह्यूमिड. ठीक है, इट हैज़ नॉट बिकम कोल्ड, इट वॉज क्वाइट वार्म, लेकिन ह्यूमिडिटी थी. नॉट दैट कोल्ड. कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ. जो हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ होता है, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, ज़्यादा ऊंचाई पे जितना कोल्ड रहता है, वैसा कोल्ड अभी वहाँ पे फील नहीं हुआ था, है ना, जो कि इनको दैट वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, पूरे साल भर जिस तरीके का वो लोग फील करते हैं. इट वाज नॉट लाइक दैट. फिर नेक्स्ट उसने क्या बताया? प्लांट सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns. ये दिख रहा है कोबरा लिली, ये पिक्चर में यू कैन सी दैट. व्हाई इज इट कॉल्ड कोबरा लिली, यू विल अंडरस्टैंड, है ना. तो ये जून 25 को जो ये फर्न है, इसके अंदर से आपको ये कोबरा लिली इस तरीके से ग्रो होते हुए, बाहर निकलते हुए आपको दिखाई देने लगे. कब? ऑन June 25. यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. The mist affords a certain privacy. Mist affords a certain privacy. Mist hides few things, and the things that are hidden cannot be seen, so that privacy is held. The privacy is maintained, and who is doing that? It is mist. है ना. Some things are hidden. कई चीजें आपको दिखाई नहीं दे पाती हैं. ठीक है, तब लेकिन जब वो मिस्ट हटता है तब आपको दिखाई देता है, और जब आपको ऑल ऑफ अ सडन वो चीज दिखाई देती है, तब आप सोचते हो अरे ये सब कुछ यहाँ पे था क्या, ये यहाँ पे इतने चेंजेस हो गए, हमें पता नहीं चला. क्यों? क्योंकि कुछ वक्त पहले वहां पे मिस्ट था. यस, नेक्स्ट. June 27. So may I start? Yes. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming im- imprecations. As for the lychees, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Other new arrivals are the starlet minivets. The females are yellow, flit- flitting silently among the leaves like brilliant jewels, no matter no matter how leafy the trees. These brightly colored birds cannot conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of
Dawn goes unnecessarily aggressive, chasing the miniwits away. A tree creeper moved rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dirt or food for the insectivorous birds. I'll stop sharing for a moment because I want to share something else. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can. So this is, what is it? Minivet. Minivet. स्कारलेट मिनीवेट, है ना? ठीक है, तो जिस बर्ड के बारे में वो बात कर रहा है वो ये है, और ये जो स्कारलेट मिनीवेट है, ये जो रेड है ना, ये मेल्स हैं, और ये जो येलो है ना, ये फीमेल्स हैं. उसने लिखा है ना वहां पे, फीमेल्स आर येलो. ठीक है, चलो कमिंग बैक. Can you see the page of textbook again? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here in the entry on June 27, he has talked about some birds. ठीक है, तो see how nicely has he described this thing. Other new arrivals मतलब इस डे में ये वाली बर्ड्स हैं जो वहां पे आ गए हैं. ये क्या है, इसका मतलब इमिग्रेंट बर्ड्स हैं जो पहले से वहां पे नहीं थे, लेकिन इस पर्टिकुलर सीजन में ये आना शुरू कर देते हैं. तो न्यू अराइवल्स हैं ये भी. तो अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनिवेट्स. द फीमेल्स आर येलो, फिटिंग flitting silently among the leaves like brilliant jewels. अब जब ये ट्रीज में बैठे होते हैं, अभी हमने देखा भी था यहाँ पे कहीं पे ट्रीज का भी इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ कहीं पे, लाइक दिस. ये जो है दिख रहा है आपको एक इमेज यहाँ पे, Yes, sir. है ना? तो ऐसे एक बड़ा सा ट्री है और उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से बर्ड्स हैं. अब ट्री है मीन्स ग्रीन, और उस पे ये छोटे छोटे से रेड और येलो स्कारलेट्स बैठे हुए हैं, है ना? तो कैसा लगेगा, जैसे कुछ इट हैज बीन डेकोरेटेड विद सम जेमस्टोन्स, कुछ जेमस्टोन्स लगाए हुए हैं उसके अंदर, है ना? तो द ट्री अपीयर्ड ज्वेल्ड. ट्री कैसा दिखाई देने लग जाता है, लाइक इट हैज बीन ज्वेल्ड, है ना? इसका ऑर्नामेंटेशन किया हुआ है. ओके, तो दिस इज व्हाट ही हैज रिटन हियर. लाइक उसमें ये कैसे दिखाई देते हैं, ब्रिलियंट ज्वेल्स की तरह. नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज. अब क्या होता है कि ट्रीज में कितनी भी लीव्स क्यों ना हो, कितना भी डेंस क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि इन बर्ड्स का कलर इतना ब्राइट होता है, इतना ब्रिलियंट कलर होता है इनका, कि आप ये छुप नहीं पाते उसके अंदर, ये आपको दिख ही जाएंगे. जब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट कलर किसी चीज का होता है तो ये हाईलाइट होती है ना? तो कितना ही डेंस ट्री क्यों ना हो, फिर भी आपको ये दिखेंगे वहां पे. रीजन इज देयर ब्रिलियंट कलर, शाइनी कलर. दे समटाइम्स contrive to go unnoticed. वो कई बार मतलब इस तरीके से कोशिश करते कि आपको पता ही ना चले और वो निकल जाए चुपचाप वहां से, है ना? Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. Now drongos again
Sir, it is a black small bird. हाँ, ये दीज आर ड्रोंगोज। ये आते हैं और ये क्या करते हैं, ये आके और स्कारलेट्स को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको परेशान करते हैं उधर आके। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree. अब creepers होते हैं, you know, do you know what creepers are? Yes, sir, the plants who climb Yes, the sir. subject who Like pumpkin and near watermelon. Yes, yes. तो ऐसे कई creepers होते हैं जो ट्री के ट्रंक्स के ऊपर चढ़ते हैं, है ना, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. अब क्योंकि बारिश हो गई तो बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं, और जब इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं तो बर्ड्स के लिए क्या होता है, बर्ड्स की पार्टी हो जाती है, बिकॉज दीज इंसेक्ट्स आर देयर फूड, है ना, तो दे आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ फूड इन दिस सीजन, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन छोड़ दिया था। इसके अलावा और क्या आता है, द रेन्स हैव हेरोल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। तो हमने एक विजिटर तो ये देख लिया स्कारलेट, एक विजिटर हमने देख लिया ड्रोंगोस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है और विजिटर, एक लेपर्ड। इस सीजन में लेपर्ड्स कैन ऑल्सो बी सीन समटाइम्स, और लीचेस। लीचेस इज अगेन एन इंसेक्ट दैट सक्स ऑन योर ब्लड, है ना, इट सक्स ऑन योर ब्लड। तो लेपर्ड आया, उसने क्या किया वहां से, इट पिक्ड अप, इट लिफ्टेड अ डॉग, और जब लोगों को पता चला, ठीक है, नहीं वो डॉग को तो ले गया था। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूज काउज। शाम को उसने बिज्जू की काऊ के ऊपर भी अटैक किया। तब काऊ को बचाने के लिए हु केम, बिज्जूज मदर केम, एंड व्हाट डिड शी डू, शी स्क्रीम्ड इम्प्रिकेशंस, शी स्टार्टेड कर्सिंग लाउडली, जोर जोर से चीखते हुए बाहर आई। तब क्या हुआ, लेपर्ड भी भाग गया वहां से, ठीक है। दूसरे लीचेस हैं। लीचेस क्योंकि उस सीजन में आपको कई जगह पे मिलेंगे, सेवरल थाउजेंड इट हैज बीन रिटन हियर, मींस एवरी नाउ एंड देन, एवरी हियर एंड देयर यू विल फाइंड लीचेस। तो कभी ना कभी आपके स्किन पे आ ही जाएंगे, एंड दे विल सक ऑन द ब्लड। तो आपको थोड़ा सा हैबिचुएटेड हो जाते हो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा यू आर लेटिंग योर ब्लड, आप ब्लड लेटिंग के हैबिचुएटेड हो जाते हो। रोज थोड़ा सा आपका ब्लड वो लोग कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं स्किन पे आके, एंड दे सक, ठीक है। दिस इज व्हाट ही डिस्क्राइब्स ऑन जून 27। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड ऑन जून 27, बट ये सब कुछ क्या था, इट इज अबाउट द अराइवल ऑफ डिफरेंट न्यू इंसेक्ट्स और बर्ड्स, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has corrugated, corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake at the same time. It doesn't keep me from sleeping. It is a good sound to read by, the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. again a very good thing described here। पहले तो हम ये देख लें इन फर्स्ट पैराग्राफ। 2 अगस्त आते आते हमने कहां से शुरुआत की थी, लास्ट वीक ऑफ जून, है ना, वहां से मानसून शुरू होने लगा था, जुलाई निकल गया, अगस्त आ गया है। तो ये क्या है, पीक है ना। तो बहुत रेनफॉल है इस टाइम पे। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कॉरुगेटेड टिन रूफ। तो जो कॉरुगेटेड टिन रूफ होती है, जो छत पे टिन, बट यू कैन नॉट सी मी ना, माय स्क्रीन इज शेयर्ड एंड यू कांट सी मी,
I'm unnecessarily moving my fingers. Yes, Sir, sir, we sir, can see you. we can see You can see you. me. So the page Yes, is sir. not, the screen is not shared. Sir, Yes, it sir, is it's shared, but Screen is shared and still you can see me. Yes, yes, sir. sir. yes, sir. Sir, because we haven't pinned this your screen. Yes, sir. So because you have webcam, Acha, that is why. it is a magic. I didn't know. Means when Sir, screen if is we shared. do this with a mobile, then our face will not be visible to others. Okay, okay. But when the screen is shared and it is webcam, on a side you can see me also. Yes, sir. Good, good, Yes, good. sir. Very Sir, nice. we Very have also not pinned your screen. That's why we can see you in the side. Acha, acha. In that grid view. Yes, sir. Yes, In sir. the grid view, if you have not pinned the screen, then you can see both. है ना? A shared screen also है. Fine, fine, fine. Good. ठीक है, तो ये जो corrugated tin roof है, इसके ऊपर जब रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो वो कांस्टेंट ड्रमिंग है. कैन यू हियर माय म्यूजिक हियर ऑन द टेबल? Yes, sir. बस ये ड्रमिंग है. Yes, sir. तो जब बहुत तेज बारिश तो फिर होती है ऐसी आवाज. Yes, sir. तो बस ये ड्रमिंग कौन कर रहा है? रेन कहाँ कर रही है? ऑन द रूफ. ठीक है. देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, just the steady swish of a tropical downpour. ट्रॉपिकल डाउनपोर जैसा होता है ट्रॉपिकल रीजन में, जिस तरीके का रेनफॉल होता है एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था. स्टेडी स्विश, स्टेडी रेन है एक जैसी. ऐसा नहीं कि कभी बहुत हैवी बहुत तेज हो रही है, कभी स्लो डाउन हो जाती है. ऐसा कुछ नहीं था. साथ में ना कोई स्टॉर्म था ना कोई थंडर था. ठीक है. जस्ट एक डाउनपोर था, कांस्टेंट डाउनपोर था. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक. और उसकी वजह से क्या हुआ? ही डिड नॉट स्लीप. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. देखो दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये, है ना. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक. मैं लेटा हुआ हूं लेकिन नींद नहीं आ रही, जगा हुआ हूं. एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. लेकिन ये मुझे सोने से रोक भी नहीं पा रही है. मतलब सोने भी नहीं दे रही है और सोने से रोक भी नहीं पा रही है. ये दो बातें कैसे एक साथ हो सकती हैं? इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक. इसकी वजह से मैं जगा हुआ हूं और एट द सेम टाइम यही आवाज है जो मुझे सोने से रोक भी नहीं पा रही है. व्हाट इज दिस? कैन समबडी एक्सप्लेन? इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड. मेरे समझ में नहीं आया, कोई समझाएगा? इट्स 39. जल्दी करो, सोचो. हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? अरे कुछ तो बोलो. ओके. दो बातें हैं. पहली बात ये कि क्योंकि देयर इज अ नॉइस ऑन द रूफ, तो आपको नींद तो आ नहीं पाएगी. आप लेटे हैं, सोने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको नींद तो नहीं आएगी क्योंकि कांस्टेंट आवाज हो रही है. ठीक है. अच्छा, अब इसको दूसरे तरीके से उसने ये बताया है कि आप वो जो ये जो कांस्टेंट ड्रमिंग साउंड है ना, ये इतना रिदमिक होता है. सॉन्ग ऑफ रेन, ये भी एक बहुत सुंदर पोम लिखी है खलील जिब्रान ने, है ना. उसमें उसने सॉन्ग ऑफ रेन ही बोला है. क्यों बोला है? क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स जब आके किसी भी सरफेस पे हिट करते हैं कॉन्स्टेंटली, तो ये एक रिदमिक साउंड होता है. और जब रिदमिक होता है, कांस्टेंट बीट्स इन अ स्पेसिफिक रिदम, तो इट इज ऑलवेज प्लेजेंट, इट ऑलवेज साउंड्स गुड. और जब आपको बहुत अच्छा लगता है, यू आर पेसिफाइड. पेसिफाइड मतलब आप पीसफुल फील करते हो. ठीक है. तो पीसफुल फील करते हो मतलब आप रिलैक्स्ड फील करते हो. और व्हाट इज रिलैक्स? गेटिंग रिलैक्स्ड. रिलैक्सिंग इज लाइक स्लीपिंग. हम सोते हैं, वो क्या होता है? दैट ऑल्सो इज रिलैक्सेशन. ठीक है. तो आपको यू विल फील लाइक स्लीपिंग एंड एट द सेम टाइम you will remain awake, means half slept half awake.
वो वाली स्टेज में हो आप. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. अच्छा, एक और यहाँ पे देखो, फिर ऐसा ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. इट इज अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन. बाहर बारिश है, अंदर बिल्कुल साइलेंस है. एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स. जब टिन रूफ पे रेनफॉल होता है तो स्प्रिंगिंग मतलब बहुत सारे ड्रॉप्स गिर के वापस बाउंस बैक होते हैं. ठीक है, रेन ड्रॉप गिरते हैं, आप अगर बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व करोगे तो रेन ड्रॉप्स दे बाउंस बैक, है ना, बाउंस होते हैं वापस, उछलते हैं. ठीक है, और साथ में क्योंकि टिन रूफ है तो उसमें कई सारे लीक्स हैं. तो वो लीकेजेस की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ अंदर पानी, वाटर इज सीपिंग इन, है ना, कुछ पानी अंदर भी आ रहा है. तो क्योंकि वो पानी अंदर आ रहा है और बाहर से कॉन्स्टेंटली रेन की आवाज सुनाई दे रही है, तो देर इज अ फीलिंग. क्या फीलिंग है? अब ये है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन. आप घर के अंदर हो इसलिए आप रेन से अनटच्ड हो, आप उस तरीके से भीग नहीं रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग ड्रेंच्ड, है ना. बाहर होते तो आप पूरे गीले हो जाते, तो आप घर के अंदर आप रेन से बचे हुए हो, यू आर अनटच्ड बाय रेन, येट यू आर इन टच विद द रेन. आप घर के अंदर होते हुए, अनटच्ड होते हुए भी यू आर इन टच ऑफ द रेन. क्यों? क्योंकि साउंड आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई दे रहा है. और दूसरी बात कि जो कुछ लीकेजेस हैं उससे कुछ पानी अभी अंदर भी गिर रहा है घर के अंदर, है ना. तो यू आर इन अ टच ऑफ द रेन बट यू आर नॉट getting drenched, so you are untouched by the rain. Is this clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, now it is 2:43, so I think we should stop. Remaining part we'll finish reading in the next class. Okay, Okay, sir. and by the time remaining students will also finish their assignment, I hope, and you will not have any problem in finishing it. Okay, so shall we stop now? Yes, sir. Sairam, sir. Sai Ram. Thank you, sir. Sairam sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sairam, sir.